So finally, ICAI has decided to launch a career ascent program, a program for an experienced chartered accountant. का भैया आप experienced chartered accountant के लिए we are gonna be launching a job program which is there, right? This is coming after very long from ICAI side, and this is something which is gonna be very great for all the people, those who have 1+ years of experience and looking for a job change. अब भैया हम परेशान हैं और we want to change a job or we want to look for a better salary. If you are looking for those brackets, this program is for you. I would be happy if you can follow two important things before we move forward. Number one, request you to please subscribe this channel because all the updates related to career program as well as related to your interviews will be out in this channel. Number two, whatever the important links related to job openings, related to the important playlist, has been curated in the description. Don't forget to check it out. Now let's see how does this career ascent program is going to be working and what all things has been covered here and who all are eligible for the same and how do you register for the same. Right. So first of all, right, this is a program which is going to be happening on 2nd and 3rd of July, which is there, and of course this is going to be a virtual program which is happening in 6 different cities. 6 अलग-अलग cities में हो रही है. सर इसकी डिटेल्स कहाँ मिलेगी और कहाँ से आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं? तो लेट मी जस्ट शो यू थ्रू एन ICAI वेबसाइट. आप ICAI की वेबसाइट पे जा सकते हैं. ICAI कैंपस आप गूगल पे लिख दीजिए, ICAI कैंपस प्लेसमेंट्स. Right, let me just show you and share my screen as well. Then when you write ICAI campus placements on the Google, you will be able to see the ICAI placement program, and once you scroll it down here, you will be able to see the respective announcement for the career ascent program has been given. Now the first question is how do you register for the same? Very simple, right? You go to career ascent, click on member. Once you click on member, first you have to click on register here. You have to put out your basic details, and of course membership number is mandatory when you want to be applying for the same. Sir सबसे पहला सवाल eligible कौन है इसके लिए बताइए. If you can see it on the screen, it says, right, a chartered accountant having a valid membership number who has held a membership number for at least an year. मतलब 1 साल हो गया है membership लिए हुए तभी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो. सर एक और डाउट, सर आई एम होल्डिंग अ COP ऑल्सो, एम आई एलिजिबल फॉर द सेम? तो देखते हैं क्या बोलता है. हु yes, on or before this shall be eligible to apply provided that he or she is not holding a full-time COP of a practice on 31st of May 2026. अगर आप 31st May 2026 के अंदर या इस ड्यूरेशन में इफ यू आर होल्डिंग अ COP तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं हो. मतलब वो लोग जिनके पास 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड दोज हु आर लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, यू आर एलिजिबल फॉर द सेम. राइट, सो स्टार्ट डेट हैज बीन 1st June. लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 15th of June. तो रिक्वेस्ट टू प्लीज रजिस्टर बिफोर 15th of June. आई टोल्ड यू वेरी यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ. नाउ वंस यू लॉग इन देयर, जैसे आप उस पोर्टल में लॉग इन करेंगे, राइट, आपको कुछ इस तरीके से आप दिखेगा. अच्छा, बट बिफोर यू साइन इन देयर यू विल आल्सो बी एबल टू सी वन स्मॉल डिक्लेरेशन व्हिच यू हैव टू साइन. इस तरीके का एक छोटा सा डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा व्हिच यू हैव टू जस्ट पुट इट थ्रू कि व्हाट इज समथिंग यू आर गोना बी गोइंग थ्रू. आफ्टर यू डू द सेम, राइट, यू विल बी फिलिंग आउट द फॉर्म व्हिच इज देयर. एक डिटेल फॉर्म आपके लिए रहेगा, यहाँ पे आपको देखेंगे, यहाँ पे यू हैव टू स्टार्ट फिलिंग आउट द फॉर्म. यू हैव टू स्टार्ट फिलिंग आउट योर पर्सनल डिटेल, बेसिक डिटेल्स एंड ऑल द स्टफ. Right, then when you click on the respective details, आपके टैब वगैरह आ जाएगा and you have to start filling out the same. Right, if you want कि भैया इस पे आप dedicated video डाल दो कि how you are going to be putting out the same, right, don't worry, I'll be uploading the video on the same or you'll be able to see it on the I button. अच्छा, parallelly you can just check it out. सबसे important यहाँ पे आपका work experience section रहेगा. Request you to please fill this out seriously. ये वाला section आपके लिए बहुत important. Are you having a work experience? You have to select yes. This is one of the shortlisting parameter based on which they'll shortlist you. And the second will be your training details related to your articleship. अच्छा, once this is done, you have to also choose a center कि भैया which center you will be choosing it out of the 6 centers given to you. You have to choose any one of the center which you are really interested into. And parallelly, please don't forget you have to upload a good professional photo and you have to upload a good resume which is there. So don't forget to mess this out. Right? If you are an experienced chartered accountant and if you have to prepare a very nice CV, what you can go to our very interesting website called as tools.cmonk.com. Once you are here, you will be able to see the tools. Tools में you can try resume builder. बढ़िया सा CV बन जाएगा आपका almost free में. 50 coins आपको login पे मिलेंगे. 50 coins when you complete a profile, you hardly need 20 coins to complete your CV which is there. ठीक है, तो आपको बढ़िया सा आप CV बना सकते हैं. आपको जो टेम्पलेट चाहिए वो टेम्पलेट ले लीजिए, जो आपको चेंज करना है उस पर आप चेंज कर दीजिए. राइट, जो डिटेल्स यू हैव टू चेंज इट आउट, यू कैन डू द सेम. ट्राई इट आउट, इट्स वेरी नाइस टूल एंड वन ऑफ द बेस्ट इंडियाज टूल व्हिच इज देयर. चलो ग्रेट. आफ्टर यू डू द सेम, सर सवाल ये आता है, आई हैव सम क्वेरीज रिलेटेड टू द सेम. तो सबसे पहले यू विल स्टार्ट फिलिंग आउट अ फॉर्म. द लास्ट डेट इज 15th. प्लीज अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू सी द शॉर्टलिस्टिंग by the organization which is happening between 22nd and 24th. राइट, तो शॉर्टलिस्टिंग कंपनीज आपको इस डेट पे करेगी. बट इंपॉर्टेंट है, पोर्टल पे आपका विजिबल कब रहेगा? पोर्टल पे आपका विजिबल रहेगा ऑन 25th to 20th. मतलब कि ऑन यू हैव टू कम टू पोर्टल एंड यू हैव टू गिव अ कंसेंट टू कंपनीज. राइट, आपको आके कंसेंट देना पड़ेगा अपने कंपनीज को, जो कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट की है. राइट, वो भी आपको डेडिकेटेड रिस्पेक्टिव टैब में दिख जाएगा. वंस यू विल गो इट आउट हियर, राइट, आपको यहाँ पे रिस्पेक्टिव टैब में दिख जाएगा. कहाँ पे दिखेगा? यहाँ पे आपको कंसेंट दिख जाएगा. राइट, यहाँ पे आपको कंसेंट का ऑप्शन आ जाएगा. हियर यू हैव टू गिव अ कंसेंट व्हिच इज देयर. ओके, सवाल याद है कितनी कंपनीज को कंसेंट दे सकते हैं? आप सिर्फ 3 कंपनीज को कंसेंट दे सकते हैं. यू आर ओनली एलिजिबल टू गिव अ कंसेंट टू 3 कंपनीज व्हिच इज देयर.
right? After you give a consent, of course, companies will plan your interviews on 2nd and 3rd of July, which is there, and that is something you have to do. Now, very important thing, sir, क्या पैसा भरना पड़ेगा? Do you have to pay a fees for this campus placement program? The answer is yes. ICAI is going to be charging 500 bucks or 500 rupees, including GST from you, which you have to pay it out to an ICAI. Okay, sir, सवाल ये आता है कि सर ये जो कंपनीज का है, देखो आई जस्ट मेंशन अबाउट 3 कंपनीज एंड आल्सो दिस इंटरव्यूज आर गोना बी वर्चुअल. सवाल ये आता है कि ड्यूरिंग दिस जर्नी इफ यू फेस एनी इशू और इफ यू फेसिंग एनी इशू रिलेटेड टू द वेबसाइट, डोंट फॉरगेट टू प्लीज कनेक्ट विद दिस नंबर और जस्ट सेंड द मेल ऑन द ईमेल आईडी हैज बीन मेंशन टू यू. इसको आप ध्यान से देखेंगे. सर इसमें कोई मिनिमम सीटीसी वगैरह का कोई पैकेज का चक्कर है या कंपनी हमें कोई मिनिमम सीटीसी देगी क्या? हाँ, उसमें भी आई विल जस्ट शो यू द लिस्ट ऑफ मिनिमम सीटीसीज व्हिच हैज बीन शोन टू यू बाय द कंपनीज. बट बिफोर आई मूव फॉरवर्ड फॉर द सेम, इफ यू आर सीरियस एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सीरियस स्विच ऑफ अ जॉब, सर मुझे या तो कैंपस से मिले या तो मुझे ऑफ कैंपस मिले, right? Or also I want to leverage my profile, I want to prepare my CV, I want to get an edge, I want to also move to off campus placements. So we are also launching our second batch of getting interview ready workshop for GI 2.0. Last time हमने जब GI 2.0 लॉन्च किया था बैच नंबर 1 फॉर एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसमें से 90% ऑफ द पीपल वर एबल टू पिवट इट आउट एंड स्विच द सेम. काफी सारे लोग उधर से दुबई भी मूव आउट हो गए थे. तो अगर आप देख रहे हैं कि भैया मैं एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं चाहता हूं कि अपने जॉब चेंज करूं, दिस इज अ प्रोग्राम फॉर यू विच इज देयर. वी हैव कंडक्टेड 97 बैचेस ऑफ GIR. This is GI 2.0, मतलब only for an experienced chartered accountant with 1+ years of experience, which is there. Everything related to interview will be covered out here. The batch is a weekend batch. आपका स्पेशल ध्यान रखा गया है कि बैच को वीकेंड में रखा गया है. And one of the best thing is that the timing is also from 8 to 1. राइट, 8 बजे से लेके 1 बजे का आपको टाइमिंग दिया गया है. एंड द बैच इज ऑन 20, 21, 27 एंड 28. राइट, 4 दिन का बैच रहेगा बट बहुत डिटेल करिकुलम है. एंड इसके साथ साथ यू विल आल्सो गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट आफ्टर द बैच एज वेल. ठीक है, तो ऑफ कोर्स वी विल हैव अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस फॉर व्हिच यू विल बी एबल टू गेट द सेम. अच्छा, इसके लिए अगर आपको रजिस्टर करना है, यू कैन ऑल्सो गो टू आवर वेबसाइट पैरेलली, राइट? यू कैन गो टू आवर वेबसाइट chemong.com and you can check on interview preparation section for experienced chartered accountants. That is what you can check. And also you can check for multiple master classes which are also there. Now coming back to a discussion कि सर कितना minimum CTC has been recommended by companies for experienced chartered accountant. तो ICAI says that if you are between 1 to 5 years of experience, you will have to give a minimum CTC of 12 lakh. 5 से 10 है तो 17 लाख, 10 से 20 है तो 26 लाख और 20 साल के ऊपर है तो कम से कम 38 लाख का CTC आपको देना पड़ेगा. इसी के साथ साथ इंटरव्यूज वर्चुअल मोड्स में होंगे between 9:30 to 6 PM which is there, and there are 6 different cities which is gonna be there. Sir, on what basis which you select a city? Of course based on the city which you are looking for a job, that should be your parameter of shortlisting. अच्छा, इसी के साथ साथ जस्ट ऑल्सो फॉर अपडेट, सर कंपनी से ये लोग पैसा ले रहे हैं कि? हाँ जी बेटा, कंपनी से भी ये पैसा ले रहे हैं. तो कंपनीज हैज टू पे 50,000 रुपीज टू कम टू कैंपस प्लेसमेंट्स प्रोग्राम टू रजिस्टर एंड दे हैव टू रजिस्टर फॉर देमसेल्व्स व्हिच इज देयर. ठीक है, तो दिस हैज बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम फॉर ऑल ऑफ यू. तो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज 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 पार्टिसिपेट इन द सेम. ऑल्सो आई वुड बी पैरेलली सेइंग दैट कि आपको अगर इस कैंपस प्रोग्राम में एज लेना है तो आपके सीवी में कुछ अच्छा दिखाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ सम स्किल सेट्स, इन टर्म्स ऑफ सम नॉलेज और इन टर्म्स ऑफ पास्ट वर्क व्हिच यू हैव डन. तो थोड़ा सा आप ध्यान से करिए. एंड ऑफ कोर्स राइट, इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन माय चैनल आई विल अपलोड अ लिस्ट ऑफ कंपनीज व्हिच हैज पार्टिसिपेटेड इन द पास्ट, एंड इफ यू वांट आई विल आल्सो अपलोड अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन हाउ टू फिल आउट अ फॉर्म. So if you have any queries, don't hesitate to put it out in the comment section. I'll be happy to help you out. And one more interesting update, right? A lot of people have completed our AI for Finance course. This is a course which has been offered free of cost to all the chartered accountants and any finance folks which is there, right? The first India's course on AI for Finance. And you can see it out. This is a 15 hours dedicated course. You complete it out, you get a certificate. शानदार कोर्स है, मजेदार कोर्स है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है. इसको चेक करना ना भूलिए and do register for the same as well. Right? And if you have any queries related to the experienced chartered accountant campus placement program, don't hesitate to put it in the comment section. I'll be happy to help you out. Wish you all the best for an interviews. Stay connected.